हेलो, मॉर्फोलॉजी लेक्चर नंबर 10। अब थोड़ा सा रिलेटेड कंटेंट में अगर आप एक देखोगे चीज, तो मैंने आपको पेज नंबर 73 और इन्फ्लोरेसेंस नहीं सिखाया। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ओके, फ्लावर को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन। फ्लावर को हमने क्लासिफाई किया था। चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सी, वी क्लासिफाइड फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ, first we'll say number of sex organs, right? Bisexual, unisexual. Then we classified it on the basis of symmetry. On the basis of symmetry, it is divided into actinomorphic, zygomorphic. Okay, your body one straight line में अगर दो equal halves होते हैं तो zygomatic. Any section passing through the center is actinomorphic. Again, we classified flower on the basis of number of whorls it has, whorl members it has. Okay, 5 sepals, 5 petals, pentamerous. 4 sepal, 4 petal, tetramerous. 3 sepal, 3 petal, trimerous. Okay, so इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया था फ्लावर। अब और एक प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, that is position of ovary in the flower. What is position of ovary in the flower? Okay, so जो थैलेमस है, फ्लावर का थैलेमस रिसेप्टेकल, उसका शेप अलग अलग प्रकार का है। बेसिकली आप सब लोग ये ध्यान में रखो, फ्लावर इज डिजाइन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर वैरायटी ऑफ अडेप्टेशंस, फॉर वैरायटी ऑफ अडेप्टेशंस इट इज शोइंग वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर में हमने अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार इसको क्लासिफाई किया है। तो आज हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ओवरी, बिकॉज ओवरी, ओवरी वॉल, ओके, देन अदर प्लांट पार्ट्स, ओके, ये सबसे रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। तो वहां पे मैंने इसको छोड़ दिया था। ओके, वी कंक्लूडेड फ्लावर, सो नाउ विल कंप्लीट दिस पार्ट एंड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, सो सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ ओवरी, तो यहाँ पे सिंपल एक मैं बात करूंगी कि अभी तक जो हमने फ्लावर का थैलेमस ड्रॉ किया था, ओके, दिस इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर, पेडिसिल, दिस इज थैलेमस ऑफ द फ्लावर। सो शेप ऑफ द थैलेमस मे बी लाइक दिस, शेप ऑफ द थैलेमस may be a shallow cup like structure, right? Shallow cup like structure. Shape of the thalamus may be globular like this, okay, or shape of the thalamus may be a deep cup like this. Okay, so on the basis of shape of the thalamus, on the basis of shape of the thalamus, हमको फ्लावर को क्लासिफाई करना है। Okay, so we are classifying flower on the basis of shape of thalamus. देखो मैंने अलग अलग प्रकार के थैलेमस के शेप ड्रॉ किए, जिसमें कॉमन स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज पेडिसिल, and this is the swollen tip of the pedicel, that is thalamus, right? तो थैलेमस के अलग अलग शेप, ओके, ये फ्लैटेंड है, ये शैलो कप है, ये ग्लोबुलर है, और ये डीप कप है। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थैलेमस? Thalamus is swollen tip of the pedicel for insertion of floral whorls. It is for insertion of floral whorls. Okay, so floral whorls जो है, जैसे हमने बोला था यहाँ पे कैलिक्स है, देन ऊपर करोला है, राइट, देन स्टेमन्स है और कार्पेल है। तो ये सब फ्लोरल व्हर्ल को बैठने के लिए जगह देने वाला ये swollen condensed shoot tip है। Thalamus is condensed tip with 4 nodes and 3 internodes. Definition हम देख चुके हैं। So on the basis of shape of the thalamus and one more, because of the shape, just get it, यहाँ पे अगर हम shape देखते हैं तो ये shape में देखो सबके सब व्हर्ल्स, okay, सबके सब व्हर्ल्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो they are in one straight line, they are on the rim, okay,
थैलेमस के पूरे रिम, मतलब ये थैलेमस है पूरा रिम पे, okay, in one single line all the floral whorls are present. If I am talking about this, it is also like on an average वैसे जा रहा है. देखो यहाँ पे सेंटर में गायनोशियम कार्पेल रहेगा. देखो सेम पोजीशन पे, ये पोजीशन हाईलाइट कर रही हूँ, ओके. देन यहाँ पे थोड़ा ये अट्रैक्टिव पेटल रहेगा, ओके, और ये सेपल. सो इट इज अगेन गोइंग ऑन एन एवरेज सेम लेवल पे जाएगा. ओके. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा कैलिक्स, फिर आएगा करोला, फिर आएगा स्टेमन, और सबसे ऊपर डिस्टिंक्ट लोकेशन पे टॉप मोस्ट, ओके. देखो यहाँ पे सेपल, यहाँ पे पेटल, यहाँ पे स्टेमन. तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे यहाँ पे आएगी ओवरी और कार्पेल. व्हाई दिस पोजिशन वेरीज? बिकॉज ऑफ थैलेमस शेप. Okay, point number 1, we are classifying flowers on the basis of shape of thalamus, right? Okay, then when the shape varies, one more thing we need to highlight is because the ovary is at topmost. Okay, so इसको हम बोलेंगे superior ovary. It is at top. Okay, other floral whorls, okay, these floral whorls are at lower position and inferior. Ovary is topmost, other floral whorls are below it. Okay, so here we are considering one more criteria, is that floral whorls versus ovaries position. Okay, so floral whorls को हम बोलेंगे actually flower. Okay, so flower ऊपर है, ovary नीचे है. Are you getting me? Okay, ovary ऊपर है, flower नीचे है. It is like that. Okay, so see, here we'll say ovary is superior, it is above, and other floral whorls are below it. Okay, so two criteria we are considering. First, shape of the thalamus, and second, what we considered, position of ovary with respect to other members of the flower, other whorls. देख लो एक बार डायग्राम. Right, so if we consider all this, तो जैसे मैंने बोला था कि फ्लावर नीचे है, नीचे, okay, नीचे कहाँ पे फ्लावर नीचे है? देखो यहाँ पे लोअर, फ्लावर इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम इज लोअर, फ्लावर इज लोअर. ओके, सो लोअर को शब्द आएगा, ओके, यू नो दिस, लोअर को शब्द है हाइपो, फ्लावर इज बिलो, बिलो व्हाट? ओवरी, हाइपोगाइनस. देखो शब्द आपको मीनिंग बता रहा है. फ्लावर इज बिलो द गायनोशियम, हाइपो बिलो, गायनस गायनोशियम. ओके, सो calyx, corolla and roscium are below the calyx, corolla and roscium are below the flower. Calyx, corolla and roscium are below the ovary. Okay, so this is hypogynous flower. In hypogynous flower, ovary is at the top, ovary is superior. Rest of the floral members are lower in position. Why it is so? Because the thalamus is globular. ये जो पूरा हमने thalamus shaded किया था, right? ये थैलेमस पूरा ग्लोब्यूलर है, इसकी वजह से हमको ये रिलेटिव पोजीशन मिलते हैं. ओके, आर यू क्लियर विद दिस टर्म? राइट, एनसीईआरटी में ये डायग्राम नंबर, ओके, सो हियर दे हैव शोन हाइपोगाइनस फ्लावर. ओके, सो हाइपोगाइनस फ्लावर इज डायग्राम नंबर A.
एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं तो, राइट। देन ये दोनों में देखो, ये फ्लैट है और ये थोड़ा शैलो कप शेप्ड है। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी द फ्लावर इज एट सेम पोजिशन बट इट इज अलोंग द रिम। ओके, पूरा एजेस पे है, सेंटर पे ओवरी है। ओके, सो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे पेरीगाइनस। पेरी मतलब पेरिफेरल, with respect to gynoecium, flower is at the edge, it's perigynous. Okay, so यहाँ पे ovary ना ही superior है ना ही inferior है। If we are talking about this one, okay, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से देखो बेटा, see this diagram, okay, ये डायग्राम में आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। One is position of the ovary which is deep inside the cup of the thalamus, ये thalamus के अंदर वो ovary जाके बैठी है। And one more thing, the ovary wall and the thalamus is fused. So I'm talking about two conditions. Okay, ovary is completely inside, so ovary is inferior. Okay, flower कहाँ पे रहेगा? फ्लावर देखो, यहाँ पे सेपल है, यहाँ पे पेटल है और यहाँ पे स्टेमन है। तो ओवरी का पोजीशन यहाँ पे, बाकी के फ्लावर मेंबर्स यहाँ पे। So isn't it the flower is above? Okay, flower is above. Okay, so above means epigynous. Flower is above the gynoecium and the ovary is inferior. Am I correct? This ovary is inferior, right? Okay, so this flower is epigynous flower. This one is hypogynous flower and this one is perigynous flower. Clear? Chalo, look at the diagrams. NCERT page number 73, 5.13 diagram. So, isn't it the diagram given in NCERT? Let us read page number 73. See now, based on position of calyx, corolla, androecium, it in respect to the ovary on thalamus. Okay, अभी हमने जो लिखा था देखो चेक करो. What we wrote? Floral whorls with respect to ovary. The flower are described as hypogynous, perigynous, epigynous. In the hypogynous flower, okay, chalo. In the hypogynous flower, right? See, the gynoecium occupies the topmost position. See here, the gynoecium occupies the topmost position. It is at the top. Okay, other whorl members are below it. Can you see the points? Right? Okay. So, in a hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position. Other parts are situated below. So, हमने क्या बोला था कि ये तीन whorl को हम flower बोलेंगे और ovary को, okay, ovary के against compare करेंगे. So, these three whorls are below. So, below hypo, ovary above, hypogynous. Flower is below the gynoecium. The ovary in such flower is said to be superior. Example, mustard, China rose, brinjal. चलो example फटाफट याद कर लेते हैं. So what's the example? Mustard, China rose, brinjal. Mustard, China rose, brinjal. आ गया? Right? Next point. If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located around the rim, ये पूरा, okay, so see, यहाँ पे it's present around the rim, present around the rim, okay, so peripheral part में is called perigynous, okay, these two are perigynous. इसमें deep cup है, इसमें shallow cup है.
Okay, मैंने और एक ड्रॉ करके आपको बताया था शेप. It can be like this even. Okay, in this situation देखो ये दोनों में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ये वाला और ये वाला आपको कंफ्यूज करेगा because this is also deep cup and this is also deep cup. But what I said here, thalamus is not fused to ovary wall. And when we are talking about epigynous flower, you can clearly differentiate that the thalamus is fused with ovary wall. And here thalamus is not fused with ovary wall. So if thalamus is not fused with ovary wall, it is perigynous. And if it is fused, ovary is below, flower is above. So it is epi, above, gynous. Flower is above the gynoecium. Okay, see, in epigynous flower, the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely. ये पूरा complete margin ऊपर तक चला गया यहाँ पर. Okay, then getting fused with it. Thalamus is getting fused with ovary wall, जो हमने अभी draw किया. Right? Hence the ovary is said to be inferior, as in flowers of guava and cucumber. Okay, so example. And second one is guava. Second example is guava. Right? Example है plum and rose. समझ रहे हो? Right? Plum and rose. Understood? So this is the classification of the flower with respect to position of ovary. So हमने flower को 4 basis पे classify किया. Got the point? Yes. Come to inflorescence. Come to inflorescence. What we are discussing? We are discussing inflorescence. What is inflorescence? You can see and clearly note. It is group of flowers. Right? It is group of flowers. So this is one flower, then other flower, other flower. It is modification of branch. Get it? Okay? जो हमने बार बार ड्रॉ किया था डायग्राम देखो. फ्लावर को हमने ऐसे बोला था. ओके, तो ये एक फ्लावर है, तो यहाँ पे और दूसरा फ्लावर है. आर यू गेटिंग दैट? राइट? यहाँ पे और एक तीसरा फ्लावर है, फिर और एक फ्लावर. ओके, सो इजंट इट अ स्ट्रक्चर डेवलपिंग लाइक अ ब्रांच? ओके, तो ये ब्रांच से जो स्ट्रक्चर बना है, ओके, each one, this one is flower. Okay, so ये एक फ्लावर देखो, ये यहाँ पे दूसरा फ्लावर, ये यहाँ पे तीसरा फ्लावर. Isn't it appearing like this? Okay, so branch stem tip modifies. Branch should tip modifies to inflorescence. Inflorescence is group of flower, bunch of flower, in which each individual is called floret, little flower. Okay, now according to arrangement, see, simple what you can see. Here the growing tip is here. Growth is occurring continuously, infinite growth. Okay, this is oldest flower, flower number 1. ये पहला फ्लावर आया, फिर ये दूसरा फ्लावर आया, फिर ये तीसरा आया, फिर चौथा आया. Growth is continuously occurring towards the tip. Oldest flower is towards the base. ये देखो, इसको सपोर्ट देने वाला क्या है? ये यहाँ पे है बेस. Okay, so near the base, the oldest flower. This type of inflorescence is called racemose. Point number 1, when the tip continues to grow, infinite growth. Point number 2, the oldest flower is at the base, young flower are at the tip. Okay, this type of arrangement, when the oldest structure are near the base, याद करो roots में हमने सीखा था, old secondary root कहाँ पे है? Towards the base. Okay, so isn't it like that arrangement?
oldest flower is near the base and the youngest is at the tip. Okay, so tip के पास young है, so इसको हमने बोला था acropetalous. मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि हमेशा छोटा जो स्ट्रक्चर है उसका पोजीशन ध्यान में रख के टर्म्स बनाई जाएगी. You are not supposed to notice the smallest structure present at what point, and with respect to that the word is acropetalous. यहाँ पे exactly उल्टा. Here you will see exactly उल्टा. See, the oldest one, okay, the oldest one जो सबसे पहले आया ये at the tip, and then this is second flower, this might be third flower. So growth is occurring towards the base. Growth is occurring towards the base. फिर यहाँ पे growth होगी, फिर oldest flower, फिर young flower. Okay, so ये 1 2 3, ये होगा fourth, ये होगा fifth flower. So growth is occurring towards the base. Okay, youngest flower, ये youngest flower है हमारे is towards the base. Okay, so young structure towards the base, तो हम इसको क्या बोलेंगे? Basy petalous. Okay, it has limited growth क्योंकि grow होते होते नीचे यहाँ पे mature plant आ जाएगा. So this is racemose inflorescence with infinite growth. This is cymose inflorescence with limited growth. Here the arrangement is acropetalous. Here the arrangement is basy petalous. Right? Okay. Now इसके बहुत सारे प्रकार है, वो मैं रिवीजन में सिखाऊंगी. फिलहाल NCERT पढ़ लेते हैं. We are on page number 71. See, a flower is modified shoot tip wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Shoot apical meristem changes to floral meristem which develop into flower. Meristematic tissue, dividing tissue. ऐसे tissue, ऐसे cells जो divide होके differentiate होके flower बनाएंगे, that is floral meristem. The apex produce different kinds of floral appendages laterally at the successive node instead of leaves. Okay, leaves की जगह ये flower बनाएंगे. Normally इसके पास leaf होता था, यहाँ पे leaf होता था normally, लेकिन अब उसने leaf नहीं बनाया, sepal, petal, stamen, carpel बनाया. When a shoot tip transform into flower, it always solitary. Solitary is single. Okay, one tip modified to one single flower, other tip modified to other flower. Right? Okay. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. It is termed as inflorescence, group of flower, bunch of flower. Depending on whether the apex gets developed into flower and continues to grow, two major types of inflorescence are defined: cymose and racemose. Cymose and racemose. Okay, in cymose type, the inflorescence, the main axis continue to grow. देखो हमने बोला था continuous growth. ये यहाँ पे मैंने arrow draw किया है. It continues to grow. The flower are born laterally in the acropetalous succession. Okay, lengthwise flower की development होगी. Acropetal मतलब youngest at the tip, oldest at the base. In cymose type inflorescence, the main axis terminate in a flower. Hence is limited growth. The flowers are born in basy petalous succession. ये बात ध्यान में रखो, सबसे छोटा स्ट्रक्चर का पोजीशन हम ध्यान देंगे, उसके अनुसार शब्द बनाएंगे. The words, botanical words are coined with respect to position of the smallest structure. Right? Okay. So this is what is about NCERT. अब एक थोड़ा सा जो डायग्राम हमको देख लेना है, जो मैंने बोला था, that will be type of inflorescence जो हमारे सिलेबस में नहीं है. MCQ वाले बहुत पूछेंगे. ओके, तो ये है अलग अलग प्रकार के inflorescence. तो थोड़ा ब्रीफ करूंगी मैं. At the end in revision, there are two special type of inflorescence: verticillaster and hypanthodium. Okay, so peculiar है. So we'll just have an introduction so that you will not feel कि मैम ने कुछ नहीं सिखाया inflorescence. Okay, it's not there. Right? So here we completed inflorescence. Objective: to study about the inflorescence.
A group of flowers borne on a common axis is called inflorescence. The common axis bearing the flowers is called peduncle. Stalk of the individual flower is called pedicel. Flowers develop on the peduncle in the axils of bracts. A flower is a modified shoot, wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Based upon their position, inflorescences are classified into 3 types. They are terminal, axillary, and intercalary. Terminal inflorescence. The inflorescence that develops at the tip of the stem or branch is called terminal inflorescence. Terminal inflorescence is seen in Crotalaria and Datura. Axillary inflorescence. The inflorescence that develops from the axil of a leaf is called axillary inflorescence. Axillary inflorescence is seen in hibiscus and dolichos. Intercalary inflorescence. The inflorescence present in between 2 vegetative parts of a shoot is called intercalary inflorescence. Intercalary inflorescence is seen in callistemon. Cauliflory. The phenomenon of production of flowers on the tree trunk and old branches is called cauliflory. Cauliflory is seen in Theobroma and Polyalthea. The inflorescence. The inflorescence. The mode of arrangement of flowers on the peduncle is known as inflorescence. Inflorescence is the characteristic feature of angiosperms. Based on their origin, inflorescence can be terminal inflorescence, axillary inflorescence, intercalary inflorescence. Types of inflorescence. There are 3 types of inflorescences, namely, racemose, or indefinite, cymose, or definite, and special type. Racemose inflorescence. It is also known as indefinite inflorescence. Flowers are produced on the peduncle in a cropetal or in centripetal manner. The flowers are attached to the peduncle with the stalks, called as pedicels. Flowers with pedicels, called pedicellate flowers, and without pedicels, are called sessile flowers. Based on the presence, or absence of pedicels, racemose inflorescence is of 2 types. Racemose inflorescence, with pedicellate flowers. Racemose inflorescence, with sessile flowers. Racemose inflorescence with pedicellate flowers. They can be simple raceme, as in Crotalaria. Compound raceme, as in Mangifera. Simple coreme, as in Gynandropsis. Compound coreme, as in Pyrus. Simple umbel, as in Allium cepa. And compound umbel, as in Coriandrum. Racemose inflorescence with sessile flowers. These can be of following types, namely, simple spike, as in Achiranthes. Compound spike, as in Oryza sativa. Catkin, as in Acalypha.
Simple spadix colocasia. Compound spadix, as in cocos. Head, or capitulum, as in Helanthus, Vernonia. And compound head, as in Echinops.